Okay, good morning, students. We will continue with the working with queries. This chapter is chapter number 5. In this chapter, there are main topics are how we can create queries. Second is how we can create a relationship between two tables. Third one is how we can create form. We have already discussed how we can create queries. So there are two methods to create query. One is query wizard and second one is query design. Now two things left in this chapter. One is how create form and second one is how create a relationship between two tables. So look at here. Uh, in Access, there is one tab database tool. Now we are going to discuss how we can create a relationship. This is the topic discussed in your chapter, that is page number 48, database tools. And then you will have to click on relationship. So look at here. In my table, in my database, there are two tables, table 1 and table 2. Now after that, you will select table 1 add and then table 2 add. Okay, जिन भी दो टेबल में आपने रिलेशनशिप बनाने हैं, you will insert that table from the database and after that close your show table dialog box. आपने इसको क्लोज कर देना. Now look at here. After that, आपने क्या करना है? In table we need one common field in two tables. Look at here. Here roll number is common. What you will do? You will left click on roll number in table 1, press that. आपने इसको टैप बटन प्रेस रखना है और ड्रैग करना है and come to the table 1 or roll number of table 2 and release your mouse button. जैसे ही आप माउस बटन को रिलीज करोगे, there is a dialog box. This dialog box is saying you are going to create a relationship between roll number of table 1 with the roll number of table 2. Then click on create button. This is the relationship. Okay, now what will be the benefit of a relationship? Look at here. Suppose in table 1 I have roll number, name 1 2 3. Name is A B C. In table 2 I have roll number and marks. Suppose roll number 1, roll number 2, roll number 3 and marks is 78, 56, now 90. Now look at here. If I am creating relationship between these two tables, okay, it means if I am going to insert roll number 4 here, it means that बच्चे की एडमिशन ही नहीं हुई, उसका रोल नंबर हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते. It is a create a relationship. It means one table dependent on other table. So if suppose I am going to new student admit, आपका एक नया स्टूडेंट एडमिट हुआ है, उसका रोल नंबर 4 है.
जितनी देर तक हम फर्स्ट टेबल में उसकी एंट्री नहीं करेंगे, सेकंड टेबल में उसकी एंट्री नहीं आ सकती. दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप. ओके, सपोज एक बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया है, मैंने इसको रोल नंबर 3 डिलीट करना है, वो उतनी देर डिलीट नहीं होगा जितनी देर रोल नंबर 3 2 में से, टेबल 2 में से डिलीट नहीं होगा. Dependent. Suppose what I am saying here, if roll number 3 is we want to delete roll number 3 from table 1, उसकी एंट्रीज हमें रोल नंबर टेबल नंबर 2 से भी डिलीट करनी पड़ेगी. डिपेंडेंट, one table dependent on another table. And moreover, suppose I am saying roll number name B के मार्क्स कितने हैं, data is scattered. Look at here, roll number B के मार्क्स कितने हैं, 56. It means from 2 table we can fetch the data. Okay, otherwise in first table there is only roll number and name, in other table there is a roll number and marks. But if I am saying what will be the marks of B, definitely look at here, roll number 2 B, roll number 2 56. It means you can fetch the data like this. आप एक से ज्यादा टेबल के ऊपर डाटा फैच कर सकते हो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. आप एक ही टेबल में सारा डाटा नहीं रखते, आप टेबल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो इन ऑर्डर टू इजी फास्ट. ठीक है, इजी एंड फास्ट. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप. आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग व्हाट यू विल डू. लुक एट हियर. Look at here, you will have to click on database tool, then you will have to click on here relationship. I am going to create another we have already created the relationship. 1 minute beta, 1 minute. I am removing that. What you will do there, look at here, you will click on database tool, then relationship. A dialog box will appear. You will have to drag all the there is a one message box that will show the number of tables. You will have to add the tables. When your tables are added, what you will do, you will click on the field, common field in first table, press mouse button, come to the second table of the same field, and then release your mouse. A message box will be there that will show the fields with which you have created the relationship. Then click on create. This is a relationship. Okay, students, show your thumb impression if your concept is clear. Okay, beta. Okay. Good. Now next is in table 1 there is 3 fields: roll number, name, and marks and grade. 4 fields are there and 4 records are there. Now it is not feasible for us to fill that directly data in the table. If you submit the money in bank, तो आप बैंक के टेबल में सीधी एंट्री नहीं करते, ऑटोमेटिकली एंट्री होती है. ठीक है, तो फॉर्म इज ए इंटरफेस. If you fill the data in form, data is automatically added in the table. Okay, now we are going to create a form. Example of form is your email ID. Your email, जब आप email compose करते हो, आप to fill करते हो, from fill करते हो, message fill करते हो, submit के ऊपर क्लिक कर देते हो, डाटा सबमिट हो जाता है. और टेबल डाटा कहां पे जाता है? टेबल्स में जाता है.
Okay, so look at here how we can create form. Look at here, form, create tab. Then here is form group. So आपने यहाँ पे अब फॉर्म करने के there are different methods. Blank form, from wizard, form design. Okay, तो आपने डिजाइन व्यू में आप वर्क कर सकते हो, अलग अलग तरीके से वर्क कर सकते हो. So in your in your book there is I think in design view. Okay, we click on create in forms group, form design. Okay, अब आपने अलग मेथड है. सेकंड मेथड कौन सा है? क्रिएट, देन इन फॉर्म ग्रुप देयर इज फॉर्म विजार्ड. ठीक है, तो आपने जैसे मर्जी कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो. इफ वी टेक फॉर्म विजार्ड, लुक एट हियर, फर्स्ट वी सिलेक्ट द टेबल. ठीक है, हमने टेबल कौन सा लेना है? सपोज टेबल 1. हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर? रोल नंबर्स, एस नेम, मार्क्स एंड ग्रेड. 4 फील्ड्स आर देयर. You will have to add the field. जो भी field आपने फॉर्म में देखनी है. I want to see roll number. I want to see name. If I click on this button, double arrow, all the field will be added. So this is selected fields. This is available fields. आपने marks select कर लिया, then grade कर लिया. Suppose आपने marks नहीं लेना, then you will have to click on this button, less than button. ठीक है, this will remove that field. Or if you click on double less than, all the field will be removed. Okay, all the field will be added. So these fields are selected fields which you want to see in the form. Click on next button. So it's showing कि format आपका जो फॉर्म है उसकी लेआउट कैसी होगी. It may be column wise, tabular, data sheet, justify. So this is your choice, which type of format you want. Suppose I want tabular format. Okay, I click on next button. It is saying the title of your form. I fill here, enter data. Next is open the form to view or enter information or modify form design. आपने डिजाइन में जाना है, फॉर्म डिजाइन में जाना है, or you want to enter the data. Yes, I want to enter the data. Then I click on here. I will select form, open the form to view or enter information. Then I click on finish button. So look at here, data is already there. I am not opening the table. मैंने टेबल ओपन नहीं किया, फिर भी मेरे पास डाटा अवेलेबल है. Look at here. I click on next. I enter Udit. Look at here. Marks is 78. Grade is B. Look at here. New. It means what I am doing here, that the data which I am going to enter here automatically will be added in the table. तो मैंने टेबल ओपन नहीं किया, मैंने फॉर्म ओपन किया है. 1 minute बेटा, 1 minute. मानव marks 99, grade A. Okay. Yes, Hardik. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. Good morning, Hardik. सर मैंने पूछना कि जो सर आपने अमन में आपने लिखा है 78% और सी ग्रेड, और सर आपने उदित पे आपने 78 ग्रेड बी को लिखा आपने. Here, Hardik, I'm just entering the data. Okay, I'm not making any type of calculations. There is a programming. Here we can automatically the grade will be calculated. But here we are not going to calculation is with the help of programming language.
not with in assess. Assess में programming ही नहीं होती. Is it clear, Hardik? Okay, sir. Thank you. Okay, beta. Now, two records I added. Now I click on table 1. Look at here. In table 1, here is 1 minute, beta. 1 minute. In a form, there are some features. Here we can automatically at the bottom there are some buttons. Look at here. We can move to the any particular. Look at here. Record. If there are 100 records are there, with the help of arrow buttons, we can go to the next record. And moreover, here is one field that is search. I search here Sumit. Look at here. Sumit is highlighted. Yes, Prabal, there is one doubt here. Yes, Prabal. सर आप बता सकते कि अगर हमने प्रोग्रामिंग करके कोई टेबल बनाना हो तो वो किस ऐप से बनाएंगे, किस सॉफ्टवेयर से बनाएंगे? Yes, Prabal, let us complete this, Prabal, first. Then Okay, I will give a detailed discussion about this. I will discuss this better. Okay? Wait, one minute. So at the bottom, there are scroll buttons are there. We can move to particular record. There is one previous record. Then here is this button is here last record में सीधे जा सकते हैं. This is first record और एक next record. Here is previous record and at the end there is new blank record. तो ये हमारे पास सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हैं. अब जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर्म को क्लोज किया, ठीक है, अब हमारे पास फिर से अगर आपने फॉर्म ओपन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म इज हियर. ठीक है, तो आपने अब फॉर्म में यू कैन एंटर द डाटा. इवन आपके पास बहुत से फीचर हैं जो आप इसको अप्लाई कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट इज if I click on okay, now I'm going to give the answer to Prabal. Okay, beta, in this will be very you can say important for you. If you are going in future, you are going to be a IT expert. For in for coming to the IT field, you must have a knowledge of HTML. Okay, तो सबसे पहले आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए. पर HTML इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसमें आप डाटा प्रेजेंट कर सकते हो, डाटा कैलकुलेशंस वगैरह नहीं कर सकते. उसके लिए देयर इज ए स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. तो स्क्रिप्ट हम लिखते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट, script. Then there is ESP, PHP, then ASP.NET.
So there are so many scripting languages are there. तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप क्या करते हो, इनकी कोडिंग HTML में एम्बेड कर देते हो, पेस्ट कर देते हो, एंड इन दैट केस नाउ योर HTML पेज इज ए डायनेमिक पेज. कौन सा पेज बन जाता है? डायनेमिक. तो अब इसको आप HTML वेब पेज को आप डेटाबेस के साथ, एसएस के साथ, MySQL के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हो. तो वट एवर यू विल एडेड in the case of your form, तो वो डाटा ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है टेबल्स में. तो लुक एट हियर, in class 10 there is a one topic in HTML that is called forms. उसमें forms बनते हैं. Look at here, मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ. If I have here, look at here. Look at here, there is one page. I open the web page in browser. So look at here, there is a form. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फॉर्म इस तरीके से होता है. डाटा आपने एंटर कर दिया, लाइक पासवर्ड, email ID, then mail, contact number, then your qualification, then your address. But मैं यहाँ पे आपने अपना कोई resume attach कर दिया. When I click on submit button, data will not be added in the database. Reason is this is only HTML form. I have not written any script here. मैंने यहाँ पे कोई script नहीं लिखी, पर जब मैं script लिख दूंगा, ये सारा का सारा data कहाँ पे चला जाएगा? MS Access में चला जाएगा. So this is called, this is the way. It means for connecting your HTML with your database, you will have to learn scripting language. Prabal, yes beta. सर जैसे अगर हम HTML के साथ करते हैं तो वो सिर्फ वो ब्राउजर पे ओपन होगा, अगर हम स्क्रिप्ट के साथ करेंगे तो वो MS Access पे ओपन होगा. नहीं 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 बेटा, होगा ओपन वो ब्राउजर में ही. ओके बेटा. ओके सर. So now there Prabal, unmute yourself. Prabal, unmute yourself बेटा. यस सर. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने फॉर्म HTML में ही क्रिएट कर लिए तो व्हाट इज नीड ऑफ फॉर्म्स इन असेस? इज इट ना? तो बेटा जो जो हम लार्ज स्केल के ऊपर वर्क करते हैं, लाइक ईमेल्स या बैंकिंग, वहां पे जो फॉर्म्स क्रिएट होते हैं वो इस तरीके से क्रिएट होते हैं इन HTML. ओके, बट व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी स्मॉल, सपोज देयर इज ए वन शॉप, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, अपने क्लर्क को, क्लरिकल डिपार्टमेंट को फॉर्म्स क्रिएट करके दे सकते हो. तो वहां पे वो कुछ भी एंट्री करेंगे वो टेबल्स में चले जाएगी, आप टेबल का डायरेक्ट असेस नहीं दोगे. इज इट क्लियर बेटा? यस सर. ओके, यस सर. नाउ I am going to discuss here the back exercise questions here. There is one topic report is there, but now time is almost over. So I am going to discuss the back exercise questions first. Okay, students, fill in the blank. A dash is a database object that help us to retrieve and view information from one or more database tables. Yes, beta. Yes, Bani. Sir, it's query. It is. Query. Beta, your voice is not clear, Bani. The Prabal. query. Sir, query. Sir, Yes. he is saying query. Yes, yes. Query is a
It is a database object that helps us to retrieve and view information from one or more database table. Second one, in a query, the dash property is used to see the condition on the basis of which the record are filtered. Sir, Yes, criteria. criteria. Very good. Excellent. Third, we can set multiple criteria in a query using dash property. Or property. Or property. Or property. Very good. The property is used to filter the data, enter in ascending or descending order. Sort. Sir, sort. Yes, sort. Very good. The bottom panel of the select query window display the dash. Design grade. Design grade. Design grade. A dash is a effective way to organize and summarize data in a printed form. Sir, report. These are reports. Next, true and false. Query help us to retrieve information from one or more tables that meet a specific condition. Sir, true. It is true. A report is created exactly in the same way as forms are created. But different ways are different. Okay. Methods are same, but the ways are different. It is false. To specify multiple criteria or properties used. To specify multiple criteria or properties used. It is true or false? It is. Sir, It is true. sir, in second point, in the book is written a report can be created exactly in the same way as we have created a form. Prabal, here method names are same, but the process are little bit different. So this question is confusing one. So we will consider Yes, this. sir. Okay. Otherwise, I will discuss with others and then I will discuss. Because otherwise, method name are same, but way is different. Next is to specify multiple criteria or properties used. It is true. We can't run a query without saving it. False. It is. Look at here. If I create a query, so look at here, queries here, and if I want to, so it means query is implementing without storage. ठीक है, आप उसको query को execute कर सकते हो, run कर सकते हो. Next is the sort query is used to filter the data either in ascending or descending order. It is true. A relationship works by matching a field with the same name in two tables. It is true, but name may be different. Fields का common होना चाहिए. Data, suppose in first table I am using RN, in second table I am using a roll number, field name. Field name may be different, but field की type same और data same होना चाहिए. It is true. Once a relationship is set, it can't be deleted. We can't delete the relationship. Look at here. अगर हमने कोई रिलेशनशिप बनाई हुई है तो आपने उस रिलेशनशिप के ऊपर राइट क्लिक करो और देन क्लिक ऑन डिलीट. रिलेशनशिप कैन बी डिलीटेड. Form view is used to change the structure of your form. Form view is false. हम view कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते. Now there are some application based questions. Student, time is over. In next period we will discuss the remaining questions and reports. Okay students, take care. Bye beta.